So today we'll start off with selective breeding. Breeding means mating, using two parents to produce an offspring. That is known as what? Breeding. Two individuals mate together produce a offspring generation. But when we use the selective with breeding, हमारी choice का offspring, the desired offspring. What you selected, you want that offspring, selectively bred. And can you tell me what would be any different reasons that a farmer would perform selective breeding, not breeding? Why selective breeding? To get desired characteristics in animals. Good, good job. For example, For example, more yield of milk from a cow, good, good. better guard dogs. ठीक, They बिल्कुल. ऐसे ही. एग्जैक्टली दो काउज हैं, एक काउ ज्यादा यील्ड देती, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज दैट टू मेट, तो वो आपका सिलेक्टेड ऑफस्प्रिंग देगी. सो दैट इज व्हाट वी कॉल as selective breeding. Choosing desired outcomes. You have your desired outcomes in mind, and according to those outcomes you choose the two parents and breed them together. And this is, अगर हम बात करें how is it done in animals. Selective breeding or artificial selection means to select individuals with desirable characteristics and breed them together. The process doesn't stop here though, because it's unlikely that not all of the offspring will show the characteristics you want. So the offspring that do show the desired characteristics are selected, and they are bred together to produce the offspring. This process can be repeated for many successive generations before you can definitely say कि आपने एक बिल्कुल new breed produce कर दी है, and that whole new breed is something that you always desired. Got it? And जी. that breed will reliably show those selected characteristics in all of the offspring. फिर वो न्यू ब्रीड ऐसी होगी जो कि वो सारे ऑफस्प्रिंग में वो आपकी सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और वो रिलायबली शो करेगी, मतलब इन एवरी ऑफस्प्रिंग कंफर्म द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी देयर ऑब्वियसली. So there are two types: natural selection and artificial selection. Before that, how would you define in 2 to 3 lines that what is selective breeding in detail? कैसे डिफाइन करेंगे? Mating animals हम्म. to obtain certain characteristics in animals एंड व्हाई इज इट डन, ये भी साथ बताएं. is done to increase yield. uh, To और get, वजह क्या होंगे? you choose two individuals which have those desired characteristics, breed them together to produce a reliable offspring that has all those desired characteristics. Simple. ठीक है? Okay. Good. Which is basically where you take the best plants or animals that you have in your population, and then you breed them together in the hope of getting even better offspring next time. Now, this idea isn't anything new. Humans have been using selective breeding for thousands of years, ever since we first started agriculture, which is just a fancy term for farming. Now though, we use it all the time, and we selectively breed for all sorts of things. Like for cows that produce loads of meat or milk, for crops that are resistant to diseases, for friendly cats and dogs that make us lovely pets, and for plants that have large or unusual flowers. So how does it actually work? Well, first, you take a look at the individuals in your existing stock. So that might be all of the different tomato plants in your field. And you select the ones that have the characteristics you're after. For example, these two, with lots of big tomatoes. And then we can breed these ones together to give us the next generation, which will hopefully contain some even better plants. We don't just do this once though. We do it over and over again, always picking the best ones from each generation and breeding those ones together to get a better generation next time. To see just how much things can change, take a look at this picture, which shows the original form of sweet corn that we first found in the wild over 10,000 years ago, and compare it to this modern type. You can see this sort of change in all different plants, and it's just a result of repeated selective breeding, as we try to get better, bigger, and more juicy plants.
As always though, there are some drawbacks, and the main one is that selective breeding reduces the gene pool of the population. And if you haven't heard of the term gene pool before, it's basically the collection of all the different alleles held by an entire population. Whenever we do selective breeding, what we're actually doing is selecting for certain alleles that code for the traits that we want. So as we do this over and over again, we're going to get a smaller and smaller pool of alleles, as we get rid of all the bad ones and only keep the good ones. And because the best individuals are often closely related, because they both have the good genes, breeding them together can sometimes lead to inbreeding, which makes the offspring particularly prone to diseases and inherited defects, because their gene pool is so small. This is the reason that dogs like German Shepherds and Rottweilers are so prone to health conditions. अब सबसे पहले इसके कुछ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, कैन यू टेल मी डिफरेंट एडवांटेजेस? क्या मैं ब्रीडिंग सेलेक्टिव सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग एडवांटेजेस तो बनेगा ज़्यादा यील्ड मिलेगा, जैसे फ्रेंडलियर एनिमल, ज़्यादा मीट प्रोडक्शन, जैसे काऊ में बड़ा काऊ बनेगा। प्लांट्स में तो बेटर क्रॉप्स तो मिलेंगे। ठीक है। इस मिसाल के तौर पर बड़े टमाटर बिल्कुल बने मिलेंगे। एग्जैक्टली, बिग साइज हो टोमेटोज गया मिलेंगे, बिग अच्छा साइज कलर, मिलेंगे, फ्रूटी स्वीट। अच्छा कलर भी मिलेगा, गुड। जूसी वगैरह। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपकी वैरायटी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, राइट? आपकी जीन वैरायटियां पूल कम खत्म हो हो रही जाता है। हैं। अब खट्टे फल थे, मीठे फल भी थे, ओनली स्वीट वंस आर लेफ्ट। खट्टे भी तो थे ना, एक बायोडाइवर्सिटी। आपने एक नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर दिया। बेशक लोगों को नहीं पसंद है, बिल्कुल। बट आर्ट यू गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर? आप बेस्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहे हो। प्लस अगर सोचो, अगर कोई ऐसी डिजीज आ गई जो कि सिर्फ लार्ज टोमेटोज को अफेक्ट करती है, और क्या पता जो स्मॉल टोमेटोज जो किसी को पसंद नहीं है, शायद वो रेजिस्टेंट हो, फिर क्या करोगे? हाँ, अब आपके पास स्मॉल जीन वेयर रही पूल नहीं, कम हो क्योंकि जाता आप है। तो बड़े ले आए थे। अब उन सबको एक जैसी डिजीज हो गई है, क्योंकि सब एक जैसे थे। तो दीज कैन हैव, बिकॉज दे हैव द सेम एलील्स। एलील्स होती हैं, जैसे टोमेटो साइज है, टोमेटो साइज एक जीन है, ठीक है? आई कलर है जैसे आप में, आई कलर इज अ जीन, बट उसके एलील्स क्या होते हैं? उस आई कलर की टाइप्स, ग्रीन आईज, ब्लू आईज, ब्लैक आईज। यहाँ पे एक जीन साइज था, आपके जीन एलील्स जो हैं वो चेंज हो गए थे, क्योंकि अब वो आपके पास, आपने आर्टिफिशियली उनको सेलेक्ट कर लिए। Natural selection जो होती है, that occurs naturally and the results in the development of population with features that are better adapted to their environment and survival. Naturally कोई चीज कैसे select होती है? आपके पास अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के अंदर we have brown bears and white polar bears. What do you think, which ones are naturally selected, the white polar bears or the brown polar bears? ब्राउन, नहीं ब्राउन। सॉरी वाइट। वाइट होंगे ना, वाइट होंगे हाँ नेचुरली सिलेक्ट। नेचर कैसे सिलेक्ट करिए? ब्राउन वाले शायद छुप ना पाए अंटार्कटिका में, क्योंकि अंटार्कटिका इज ऑल वाइट आइस कैप स्नोई एरिया। द ब्राउन बेयर्स वोंट बी जी। एबल टू हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स। अगर कोई प्रेडेटर आ गया, उनको खा गया, व्हाइट वाले छुप जाएंगे। इसी तरह आपके पास जो ब्लैक पेपर्ड मॉथ्स थे, दे बिकेम एक्सटिंक्ट एज वेल, क्योंकि ब्लैक पेपर्ड मॉथ्स दरख्त के ऊपर नहीं छुप सकते थे, उनको प्रीडेटर्स आके खा जाते। तो वो नेचुरली सिलेक्ट हो गए ना, नेचर ने उनको सिलेक्ट किया, आपने तो नहीं किया। आपका तो कोई कसूर नहीं, उनका कलर ही ऐसा था। दे couldn't camouflage. This usually takes a long time to occur. बहुत सालों बाद नेचर सेलेक्ट करती है। पेंगुइन्स और पांडास एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, आपने तो नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन नेचुरली वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बर्दाश्त कर पाए। टेम्परेचर या क्लाइमेट ने आके उनको नेचुरली सेलेक्ट कर दिया। वेल्स कांट सर्वाइव द हाई टेम्परेचर्स ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज डन बाय यू व्हेन ह्यूमंस इंटरवीन, results in development of population with features that are useful to only humans, अपना सोचा है, and not necessarily to the survival of that individual। और ये कम टाइम लेता है, नेचर को टाइम लगता है। वेल्स को टाइम लगा, ब्लू वेल्स को डेवलप होने में, और उनको टाइम लग रहा है अब जाने में भी। हम अगर आर्टिफिशियली आज ब्लू वेल्स को सिलेक्ट करना बंद कर दें, हमें नहीं पसंद, वो खत्म हो जाएंगी। इट इज गोइंग टू टेक लेस टाइम एज ओनली इंडिविजुअल्स विद द डिजायर्ड फीचर्स आर गोइंग टू बी अलाउड टू रिप्रोड्यूस। सो एनिमल्स के अंदर इंडिविजुअल्स विद द करेक्टरिस्टिक दैट यू वांट are bred together. Often, several different parents, all with the desired characteristics, are chosen. So the siblings do not have to be bred together in the next generation. Offspring that shows the desired characteristics are selected and they are bred together.
This process is repeated for many successive generations and you produce the same reliable generation जो आपको आपके desired features दे रही है, regardless of what the nature is going to face, regardless of what the differences in variety or biodiversity nature is going to face. Quotes. Selective breeding is also known as artificial selection. It is a process by which humans breed plants and animals for particular genetic characteristics. We have been doing this for thousands of years, ever since we first bred food crops from wild plants and started domesticating animals about 10,000 years ago. This is when we made the transition from hunter-gatherers to farmers. We no longer needed to wander around to gather food supplies. Wheat, barley, lentils, peas, rice, and potatoes were all cultivated by early citizens. We also began to tame animals for milk, meat, and hides. Goats, sheep, and chickens are thought to have been the first animals to be domesticated, followed later by bigger animals like horses and oxen for plowing and transportation. Agriculture allowed fewer people to provide more food. Regular, predictable food production led to increased populations and density of people. People now had the time to travel, trade, and communicate. Settlements began growing. The first villages and then cities were built near fields of domesticated plants. Civilization was founded upon selective breeding. How does selective breeding work? Parents with the desired characteristics are selected from a mixed population and are bred together. From the offspring, those with the desired characteristics are then also bred together. This continues over many generations until all the offspring show the desired characteristic. Just think of all the breeds of dog that are around today. These were all selectively bred from a common wolf ancestor. The desired characteristics that we select for can be chosen for usefulness or appearance, such as insect and disease resistance in food crops by breeding from the naturally resistant individuals to increase yields. Animals which produce more meat or milk to increase yields. Domestic dogs with a gentle nature. Large or unusual flowers. We just keep breeding and selecting and breeding once more until we hit the desired jackpot. Look at what we've done to modern chickens in 50 years. It's over 4 times bigger due to selective breeding. By inbreeding parents that are genetically closely related, negative outcomes can arise. The offspring will all share very similar genes. अब सोचो, सिलेक्टिव ब्रीड करवाते हुए आपने कैरेक्टरिस्टिक तो देख ली, बट आपका एक छुपा हुआ एलील जो बंदा एक कैरियर होता था, वो कैरियर वाला भी आपके पास अब कैरियर के साथ ही ब्रीड कर रहा है, और अब वो रिसेसिव वाला एलील शो हो जाए तो वो सारा ऑफस्प्रिंग आपका डिजीज भी हो सकता है, जिसको इनब्रीडिंग की वजह से कहते हैं. गॉट इट? दिस इज कॉज्ड बाय जी इनब्रीडिंग. Which could make some diseases more dangerous as all individuals would have the same weaknesses. The reduced gene pool also means that they are more vulnerable as they have less chance of being able to adapt to changes in the environment, such as climate change. There's also an increased risk of genetic disease caused by recessive genes. Being genetically very similar, if both parents carry the recessive gene for a genetic disease like cystic fibrosis, then the offspring will all inherit this disease. The white tiger is a good example of severe mutations building up due to the inbreeding of individuals that are too closely related. We have been selectively breeding for thousands of years, getting closer to our desired goal with each generation of offspring. Nowadays, we have come up with a faster way to do it: genetic engineering. We can transplant the gene for a desired characteristic straight into an organism. We will look at genetic engineering in more detail in another video. So there you have selective breeding. So these animals are commonly bred for various characteristics. जैसे आपने कहा, cows, goats and sheep that produce lots of milk or meat, chickens that lay large eggs, domestic dogs that have a gentle nature,
sheep with a good quality wool, horses with fine feature and a very fast pace. An example of an animal that has been selectively bred by humans in many ways includes domestic dogs, जो कि सारी wolves की species से भी breed आपके पास वही आगे हुए थे. यही selectively breed हो रही to produce all those gentle dog species that people की बहुत ज्यादा demand आई थी फिर उसकी. इसी तरह plants के अंदर भी selective breeding हो सकती है. Plants are selectively bred for many characteristics जैसे disease resistance, increased crop yield, hardness to weather conditions, किसके अंदर ज्यादा drought tolerance है, rainstorms tolerance है, better tasting fruits, large fruits जैसे आपने बताया large tomatoes, unusual large flowers, colorful flower. ठीक है, जैसे कि वाइल्ड ब्रेसिका की एक एग्जांपल, अभी जो दो एग्जांपल्स ना प्लांट्स में ये वाली आपने पेपर में लिखनी है. वाइल्ड ब्रेसिका एग्जांपल्स दोगे, एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स एक्स्ट्रा. गॉट इट? चाहे आपका बाकी आंसर छोटा हो. रिमेंबर दिस एग्जांपल विच हैज गिवन राइज. अब इस वाइल्ड ब्रेसिका ने कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स इन सब को भी बर्थ दी थी. यू कैन सी ओवर हेयर. इसने आगे आपके पास कितनी ज्यादा टाइप्स, आपने इसको सिलेक्टिवली ब्रीड करके इसी की टाइप्स प्रोड्यूस आपने कर दी थी. बट अगेन प्रॉब्लम लाइक इन ब्रीडिंग कैन अकर, क्योंकि वो आप ब्रेड टुगेदर कर रहे हो बेस्ट प्लांट्स और उसकी वजह से जीन पूल, जीन वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है. एलील्स कम हो रहे हैं. क्या पता वो जो बुरे वाले एलील्स थे वही कॉपी होते जा रहे हैं, अच्छे वाले कॉपी नहीं हो रहे हैं. एंड प्लस देयर इज आल्सो एन इंक्रीज चांस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेरिटिंग हार्मफुल जेनेटिक इफेक्ट्स, new diseases because of the reduced gene pool. And that is the end of your selective breeding.